guys, welcome to Mrs. Diva. Welcome to the Facebook page of Mrs. Diva and YouTube channel of Mrs. Diva. मैं हूँ आस्था जैन और हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आती हूँ होम बिजनेस आइडियाज़ और ऐसे टिप्स जिससे आप अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस ग्रो कर सकते हैं. So for our English speaking viewers, my name is Astha Jain and I bring to you work from home business ideas and ideas, marketing ideas about how to grow your existing business. So today I have a very interesting topic with all of you to discuss. One of the viewers on my YouTube channel, she left a comment on one of the videos that I have posted that she would like to know a few options around floral business. Now I'm doing this video in English language because a lot of my English speaking viewers also wanted to know about these ideas. And just because just to make it a little bit easy for everyone to understand, I'm doing it in English language and I'm simultaneously I will try to explain it in Hindi also. And if you guys have any confusion, please do feel free to connect with me and discuss with me if you would like to discuss anything. आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं और मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं किसी भी आइडिया के अराउंड, प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट. आप कभी भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक के पेज पे, यूट्यूब के वीडियो के कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे. सो आई एम ईजिली अप्रोचेबल. आप मुझे कहीं पे भी मैसेज करके और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. सो let's just begin with the ideas. So basically मैं आज ये डिस्कस करने जा रही हूँ. I will discuss a lot of options that you have around floral or flowers. So floral business किस किस टाइप के हो सकते हैं, सॉरी, फ्लावर्स से रिलेटेड बिजनेस किस किस टाइप के हो सकते हैं, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. So first is if you have because a lot of people grow flowers at their home. If you do that, and because I stay in Delhi and it seems it seems not possible for anybody to grow or to have that kind of land that you can retail flowers. But if you have that facility, you have land and you can grow flowers, then you can definitely get into retailing of flowers. You can आप होलसेल सप्लाई कर सकते हैं फ्लावर्स को रिटेलर्स को. और अगर आप अपने घर में फ्लावर्स उगा रहे हैं, देन दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस कि आप ये जो फ्लावर्स आप बहुत ही, आई एम श्योर दे नीड अ लॉट ऑफ लव, बहुत प्यार से आप लोग उगा रहे हैं अगर फ्लावर्स को, तो आप उनको आगे रिटेलर्स को सप्लाई कर सकते हैं. या अगर आपके पास स्टॉक काफ़ी सारा होता है तो आप होलसेलर्स को भी सप्लाई कर सकते हैं. एंड देन यू कैन बहुत ही एक ईजी ऑप्शन है, यू कैन गेट इन टू डिजाइनिंग bunches of flowers and you can get into the retail of this. So if you have flowers, then you can open up a small shop kind of thing and you can get into designer flower bunches. तो मैं थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ इसको. अगर आपके पास फ्लावर्स अवेलेबल होते हैं तो आप घर से ही फ्लावर अरेंजमेंट्स, बंचेस जिनको हम कहते हैं, आप उसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं. तो जब आप रिटेल करते हैं, सो आई अंडरस्टैंड दैट दिस विल नॉट बी अ वेरी इनिशियली बहुत ज़्यादा रिटर्न वाला बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि पीपल वुड नॉट नो अबाउट इट. दिन में एक आया बंदा या दो आए आपसे फ्लावर का बंच लेने के लिए. सो इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू सेट दिस अप बिजनेस. So this could be one of the ideas if you want to start slow. आप थोड़ा explore करना चाहते हैं अगर इस एरिया को, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं. And then the next idea is wedding venue decor. So इसमें आप दो तरीके से काम कर सकते हैं वेडिंग वेन्यू डेकोरेशन में. either you can provide bunches of flowers, आप खुद बना के उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, और you can also give पीपल आइडियाज. आप अलग अलग डेकोर करके उसका पिक्चर्स आप बना सकते, अपने पास रख सकते हैं क्लिक करके, एंड देन यू कैन शेयर दोज आइडियाज. सो it again goes according to the supply that you have currently
फॉर दी फ्लावर्स, किस टाइप के फ्लावर्स की सप्लाई आपके पास है, आप खुद अगर नहीं उगा रहे हैं, आप कहीं से ले रहे हैं, तो क्या आप इतनी क्वांटिटी में ले सकते हैं कि वेडिंग वेन्यू के डेकोर में आप जा सके. सो दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू फिगर आउट. आप इसको सोचिए, ध्यान दीजिए कि क्या ये आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है. हाँ, अगर आप इफ यू गो इनटू द वेडिंग वेन्यू डेकोर, देन ये दिस बिकम्स थोड़ा सा शायद विमेन के लिए अकेले संभालना इनिशियली डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज देन यू विल हैव टू मूव out a lot. So that's why I am saying that just think about it, give it some time, and if it suits you, then only go ahead with this idea basically. Then इसी idea का, you know, if we talk about this venue decoration idea, a smaller thing would be, a smaller scale business would be decorating someone's you know, for function, someone's place for any function. So for example, if it is a birthday or an anniversary, you can just go for the home decor, or you can go for a smaller venue decoration. So sometimes people do hire florist, or people do hire decorators to decorate whatever place they have taken up for a small party. So for example, लोग एक रेस्टोरेंट में अगर कर रहे हैं अपना एनिवर्सरी की पार्टी या बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, then you can provide your services as a flower decorator there. So I know, I understand कि banquets के पास खुद भी होते हैं decorators, but it really end of the day depends on the person who wants to hire you. So this could be one. So that the sound that you are hearing in background is one of my streety babies. I don't know what is irritating her. She's barking a lot, I know. Alright, so moving on to the next idea, you can open up an online store. So basically you can sell anything that you want there. So it could be handmade greeting cards that you can make with pressed flowers. So if you remember, while we were in school, we used to just keep one flower in between the books, and then it after some time when you take it out, it becomes a pressed flower. So that's something that you can use if you have certain ideas how to you know, make greeting cards out of it, or how to do watercolor from flowers. So a lot of people in their crafts, and you can get these ideas from YouTube also. YouTube से आपको बहुत से ideas मिलेंगे, and you can open up a small stationery store online, a small online store, and इसका benefit ये है that you don't have to be engaged constantly with it. So whenever you are getting an order, you have to do your work then, and then just send it to the client who has ordered for it. And apart from that, you can also get into floral themed stationery. So what you can do is you can get a diary, or you can get diaries in bulk from bulk market and decorate it with flowers and then sell it further on. So you can do this with other things also. So for example, scarves, for example, cushion covers. So get them at a wholesale price. Think what you can do with it, and then you can sell it further on. This again is very, very good for housewives and moms, because they do not always have a lot of time to spare out. So आपके पास अगर दिन में थोड़ा सा भी टाइम है, आप जानते हैं कि हाँ ठीक है मैं 1 घंटा स्पेयर आउट कर सकती हूँ, तो उस 1 घंटे में आप अपना काम करिए, and then you can, you know, you will still have these products to further sell on. And you can also do this selling via Facebook groups, Instagram, WhatsApp messages के through आप जो ये products हैं, because these will not be, you'll not be able to produce them at a very, very you know, big rate, और आपका quantity बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, because आप हाथ से बना रहे हैं. Handmade products take time, and you can do it as per your time and convenience. Next is you can also you know, get into jewelry. So sometimes jewelries like crystal pendants, they have those small flowers in them. When you go to the market, just see them. If you know how to do it, then that's another idea where you can, you know, take up as home business for yourself. Again, it will be a handmade thing, and it will be done, you will not be able to produce a huge quantity of the product, but you can you know, do your work in your own time और convenience के हिसाब से आप ये कर सकते हैं. And then flower jewelry is also very famous, and a lot of women look for this flower jewelry at various occasions. So for example, if there's a mehendi function, bride to be का मेहंदी का function है, then definitely she would want to get some floral jewelry करवा चौथ के time पे. Then you know, आप अगर किसी of course if someone is
पूजा अगर घर पे कुछ करवा रहे हैं हम लोग, तो पीपल लुक फॉर दिस फ्लावर ज्वेलरी, विमेन लुक फॉर दिस फ्लावर ज्वेलरी। एंड इफ यू नो हाउ टू डू इट, अगर आप जानते हैं, ये स्किल आपके पास है, then definitely put it into use and start your own flower jewelry business. This is something which is very upcoming and a lot of people, a lot of women are loving it. आप exhibitions में participate कर सकते हैं. So now, these lifestyle exhibitions, now they conduct these lifestyle exhibitions all around the year these days, and you can just participate in them and again sell your product there. Then we have the last idea that I would like to discuss with you all today is to get into natural perfumes or fragrances. So if you know how to do that, if you are growing your flowers and you know how to make natural perfumes or fragrances from these flowers, then this is another very, very good business option for you. So I am not asking you to do it at a very, very large scale initially. Do it at a smaller scale. Just try and test the waters, fathom the depth कि कितना आपके लिए पॉसिबल है, एंड हाउ मच यू आर एबल टू गिव टाइम टू इट, आर यू एबल टू प्रोड्यूस एज मच प्रोडक्ट एज इज रिक्वायर्ड. आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. सो जस्ट ट्राई एंड फिगर इट आउट कि कैसे पॉसिबल है. और फॉर दैट मैटर जो इसका नेचुरल वाटर है, इफ़ यू नो हाउ टू डू दैट, जैसे कि रोज जो पेटल होता है, इफ़ यू नो कि आप उससे कैसे जो वाटर है वो कैसे आप रोज वाटर आप कैसे बना सकते हो, इफ़ यू नो हाउ टू डू दैट, then you can again get into this business. And natural products का, handmade products का, organic products का जो market है वो कभी खत्म नहीं होता. And in fact with each passing day I feel that ये market जो है और बढ़ता जा रहा है. So just think about कि आपके पास tremendous options हैं, tremendous आपके पास opportunities हैं. Just you need to give a little bit of thought around it कि क्या आपको करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, planning कैसे करनी चाहिए. And for any help and guidance, I'm always there. And before I sign off, I would just like to say कि please subscribe to my YouTube channel. It is a very, very big help for me. And also you will not miss any of the videos because I post videos there every day, and I post details on my Facebook page. So please like the page also. Join our Facebook group if you want to. We discuss a lot of work from home options there, home business ideas, and you can ask your queries. And do subscribe to my YouTube channel. And thank you for watching this video, everybody. And until we meet next time, bye bye.